IVM. So that is also a beautiful thing about Sai Paranjapye's cinema, that it doesn't take itself that seriously, and it doesn't want to make some kind of a grand statement as the film progresses, or as the film end. जैसे फिल्म एंड हो रही होती है, जैसे इन फिल्म मेकर्स को डर लगने लग जाता है, अरे क्या पूरा मस्ती में चला गया, कुछ तो करो भाई, सोशियो पॉलिटिकल तो डालो इसमें, एंड में कुछ तो मारो यहाँ पे. मैंने एक बहुत फनी जोक पढ़ा था, उस पर ट्वीट पढ़ा था, उस पर लिखा था, गजल सिंगर थिंक्स देयर आर 52 hours in a day. पॉइंट पे आओ यार. But the whole essence of the cinema or any art form lies in the idea of being playful. Correct. Being playful with the form, experimenting with it, having some kind of a childlike curiosity about what the medium can itself bring. So that idea this is one of the reason I don't see in cinema, be it in the mainstream cinema or be it in the independent cinema, art cinema. Iska pata nahi, but there was very interesting thing which I read. You should respect people who wear glasses because they are literally paying to see you. Oh yeah. So that subconscious ka jo idea, that there is subconscious in the film that is present through which you can understand the artist who created it. तो वो अभी conscious इतने ज़्यादा हो गए कि there is no idea of subconscious in the art. So what you see is basically very चालू, very उसके अंदर कुछ, there is no dreaminess और director का एक signature style that you can understand that person. भाई हमने तो सुना था हैजिड एजवेल में होता है धोखा, यहाँ हैजिड एजवेल कोई और कर रहा है, धोखा हमें हो रहा है. फिर से फक अप किया मैंने, सेकंड टेक था मेरा. हेलो एंड वेलकम टू हैजिड एजवेल, माय नेम इज अब्बास एंड दैट कोट वाज फ्रॉम द 1981 कल्ट फिल्म चश्मे बद्दूर, डायरेक्टेड बाय साई परांजपे, स्टारिंग फारूक शेख, राकेश बेदी, सईद जाफरी and a host of other artists will come to talk about Chashme Buddoor. In the studio with me as usual is my co-host Urjita. हेलो जी. और हमारे जो गेस्ट हैं, ही कॉल्स हिमसेल्फ ऑथर, पॉडकास्टर, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट. You might know him better as Ronnie Malhotra from Instagram and from his own podcast called the Anurag Minus Verma podcast. Yes, it's the man himself. Please welcome to Hazard Age Well, Mr. Anurag Minus Verma. Welcome Anurag. Thank you so much. इंट्रो ठीक था आपका? बिल्कुल ठीक था. मैं भी सोच ही रहा था कि ये अच्छा हो गया. हाँ. You wanted anything else to be added? नहीं. मेरे को जब भी कोई इंट्रोड्यूस करता है तो मैं अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने लगता हूँ. हाँ, of course, ये भी हो गया, ये बाकी रहेगा. तो नेक्स्ट टाइम के लिए कीन कर दिया. बट अगर वी टॉकिंग अबाउट चश्मे बद्दूर फ्रॉम 1981. तो बट बिफोर वी कम टू चश्मे बद्दूर, मैं थोड़ा ऐसा फैन बॉय करूँगा, तो यू हैव टू सिट थ्रू इट. उर्जिता, बीन अ लिसनर ऑफ योर पॉडकास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑफ योर इंस्टाग्राम पेज. तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पूछूंगा आपको चश्मे बद्दूर पे आने से पहले, विच आई थिंक इज समवॉट connected to also Chashme Buddoor. Of course. So if you follow Anurag on Instagram or YouTube, there is a concept called Loserism that you propagate a lot. तो पहले हमको बताइए लूजरिज्म क्या होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है चश्मे बद्दूर भी थोड़ा लूजरिज्म से थोड़ा सिमिलर है, या वो थोड़ा कहीं पे एक सिमिलर डीएनए है. काफ़ी सारा लूजर फिलासफी में तो आपको पता ही, मैं किताब लिख रहा हूँ लूजर मैनिफेस्टो, जो कि शायद इस साल आने वाला है. बट तो उसमें बहुत सारी फिलासफी जुड़ी हुई है. बट चश्मे बद्दूर के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो इट्स जस्ट एक्सपीरियंसिंग फ्री फ्लो ऑफ टाइम इन द प्योरेस्ट फॉर्म. अगर उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, जैसे कि आप फिल्म थियरीज वगैरह पढ़ेंगे तो डेल्यूज करके एक फिलासफर थे, फ्रेंच फिलासफर थे, जिन्होंने सिनेमा की बहुत सारी थियरी दी थी. तो उन्होंने मूवमेंट इमेज, टाइम इमेज, इनके बारे में बोला था. तो मूवमेंट इमेज जो थी बेसिकली प्री वॉर फिल्म्स थी, जहाँ पे हॉलीवुडियन स्ट्रक्चर फॉलो होता है, A to B, उसका एक्शन रिएक्शन और सारी चीज़ें प्लॉट से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज सो टाइट. फिर एक पर्टिकुलर तरह का सिनेमा बनने लग गया पोस्ट वॉर के एरा में, जहाँ पे ऑब्वियसली जो ट्रेजेडी थी वॉर की, और उससे भी ज़्यादा एक जो एब्सर्डिटी थी हर चीज़ की, कि कोई चीज़ सेंस ही नहीं कर रही है, हो क्या रहा है वर्ल्ड के अंदर. तो वहाँ से एक नई तरह की सिनेमा जो इतना टाइट नहीं था, उसमें इमेजेस ऐसी आती थी जिनका कोई स्पेशल लॉजिक नहीं था, बट दे आर like freely flowing on screen, and the concept of characters wasting the time became a very important thing in the European art cinema. So वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो दैट होल आइडिया ऑफ टाइम इमेज विच इज़ ऑल्सो लाइक
डाइवर्टिंग फ्रॉम द प्लॉट लाइन या फिर थोड़ी सी कहीं भी चलेगी फिल्म और वहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, कैरेक्टर्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं टाइम को जैसे होता है. तो वो बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसमें टाइम क्या होता है उसका भी एक हेनरी ब्रैक्सॉन की बड़ी थियरीज है उससे उन्होंने लिया. तो चश्मे बदूर तो लूजरिज्म में भी यही है कि एक्सपीरियंसिंग द टाइम एंड एंजॉइंग द एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ द वे इट इज. तो जो चश्मे बदूर फिल्म है which is very much similar to loserism in that sense. Basically, you don't do things happen to And you are just a witness to that. That's it. Okay. Yeah. मतलब basically you are NPC characters in your own film. What's Wow. NPC? non-player character. मतलब ये वो video game GTA Vice terminology City है. में characters होते हैं ना कि जो ऐसे जिसको आप- randomly कर रहे रहते हैं पर वो जिनका कोई काम है हाँ, नहीं, हाँ. वैसे जो वो वाले. गाड़ी का दरवाजा खोल के जिसको लात मार के फेंक जैसे देता ये है फिल्म वो. पूरी Yeah. डिस्ट्रैक्शन पे बेस्ड है. इट्स डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, Right. कैरेक्टर्स भी इधर उधर जा रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ी और बातें करेंगे. तो which I really like in the film form. Yeah. Right. You saw the film for the first time, Yes. Urjita. What did you think? Man, I really liked it. Yeah, I was going to say loved, but then I realized no, that's a strong emotion. Wow. Okay. I really liked it. I really enjoyed the film. What did you think about it? Chashme Buddoor is one of my all-time favorite films. I saw it I think when I was a teenager. और वो एक मेरे ख्याल से वो एक फेज़ होता है जब पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि देखो एक अलग टाइप की फिल्म भी बना करती थी. एंड देन दे शो यू लाइक वी मेंशन्ड अमोल पालेकर फिल्म्स, ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म्स. सो वी डिस्कस्ड छोटी सी बात एंड Anand on this podcast, where we talked about how Rishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee were like the middle of the road cinema in the 70s and 80s. But I think so like we've not gone into the Shyam Benegals and the Mrinal Sen because अभी वो फेज पे नहीं है हम लोग के, वो थोड़ा और ज़्यादा सीरियस आर्टी सिनेमा है. बट साई परांजपे ऑल्सो काइंड ऑफ फॉल्स समवेयर इन दैट जोन, राइट, वेयर शी वॉज नॉट अ मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर. शी had made Sparsh before Chashme Buddoor, starring Nasruddin Shah. And Chashme Buddoor, if you see 1981, it's very unlike the kind of mainstream cinema that was coming out at that time. Do you remember the first time you were exposed to Chashme Buddoor? You came to know about Chashme Buddoor and saw it? I don't remember exactly. I think I might have seen it in the college, if I'm not wrong. Maybe when I was in engineering college or sometime then. Right. I have seen it and I loved it. And then I rewatched it many times, and I really like that whole idea of youthfulness of the college films. Not like student of the year stupidity, but that whole idea of boredom. Right. When you are young, like Yeah, the boredom becomes an essential part because you are new to the world and you think you have endless time. It's not like how at least we are in the middle age kind of thing. Time is running out. And then when you are youth, you think you are invincible. That Right. death is not going to knock on your door. And there is a lot of time and you don't know what to do with it. So that kind of youthfulness and that whole idea of boredom induced by it, that kind of cinema I really like. For example, this film. And this film is like the Chhoti Si Baat is a love letter to Mumbai. Correct. And this film I think is a love letter to Delhi. Of a certain kind of era. And especially Delhi University. Correct. So I really like that whole Delhi University. Although इसके बाद I think if I remember शायद 2 फिल्में और I have seen Delhi University पे. एक तो obviously रंग दे बसंती थी जिसका first half was like flowing and the second it became too serious and stupid for some reason to some sense. And then there was also one film on Delhi University which was also quite interesting till first half. Who was in it? दम लगा लगा रे धक्का रे. अच्छा, श्रेयस तलपड़े film. First half was okay, but then it also became very serious. Okay. So that is also a beautiful thing about Sai Paranjapye's cinema, that it doesn't take itself that seriously. Right. And it doesn't want to make some kind of a grand statement as the film progresses or as the film end. जैसे फिल्म एंड हो रही होती है, जैसे इन फिल्म मेकर्स को डर लगने लग जाता है, अरे क्या पूरा मस्ती में चला गया, कुछ तो करो, सोशियो पॉलिटिकल कुछ तो डालो इसमें, एंड में कुछ तो मारो यहाँ पे. But Sai Parnjapye was very chill in her craft and she know what she is doing. And she was really bringing out the epicness in the mundane. Correct. She's saying that मेरा mundane है जो चल रहा है, but there is epicness, and even in that form, some people say it's light film, light. I don't think it's a light-hearted. I mean, light-hearted in the that whole context it might be. Correct.
But it's very thoughtful film, the how it progresses, the experimental nature in the film, breaking of the form and everything. It's a beautifully breaking of the fourth wall also. It's such a meta film, like it is commenting on Hindi cinema as it's going on. Yes, it is commenting on Hindi cinema, and my like if you look at the film for first 30 minutes, it's brilliant. This film starts with I also posted it on Instagram. The opening credits start with the Gandhi ka photo, and then Freud ka photo, Vivekanand ka photo, and then the bikini girl comes in and they look at their eyes say, go big, replaces. Which is also like the youthfulness, whole idea of ideologies and lustful exploration, sometimes colliding or intersecting with each other. Both of these. So it was very, that whole capturing of that essence of that youthfulness, not just of the character but also of the city. Correct. For example, if you look at the frames of, if you have no interest in the film, just look at the frame and you'll get so much about the architectural detail of the city at one point. Like the Barsati, for example. In Delhi there is a concept of Barsati. Barsati is basically 5th floor or 4th floor पे जो घर होते हैं, घर भी नहीं होता, कमरे होते हैं छोटे छोटे, बैचलर्स को दे देते हैं, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, इतने ऊपर होते हैं, लिफ्ट भी नहीं होती. तो मैं भी बहुत बरसातीस में रहा हूँ, तो बरसातीस को कैप्चर करते हैं जहाँ पे ये 3 लोनर लूजर्स रहते हैं. तो ऑल्दो ऑब्वियसली बरसाती फिर धीरे धीरे थोड़ा सा एलीट और उसके अंदर चला गया जैसे जैसे टाइम हुआ. फिर अरुंधति रॉय भी बरसाती पे रहने लग गई थी, और ऐसे बड़े बड़े एम.एफ. हुसैन का भी बोलते थे, उनकी भी बरसाती थी, ये सारी चीज़ें थी. तो वो चेंज हो गया आर्किटेक्चर, बरसाती की सिंप्लिसिटी छीन गई पोस्ट 91 के रिफॉर्म. God of small things living on the 5th floor. एलिट मेंढक आ गए बरसाती में, बरसाती एलिट मेंढक निकलने लगे, तो वो चेंज हो गया. सो दिस फिल्म कैप्चर्स दैट. बट फिर इसके बाद भी जो दैट टाइटल का जो था, एंड देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन कि वो लड़की से वो मिलने जाते हैं, दोनों लड़के. राकेश बेदी जो पहले जाता है, तो उसको लगता है प्लम्बर है, तो प्लम्बर है, अब शाम कैसे बिताए. एंड देन दैट्स द ब्यूटी, फ्री फ्लोइंग टाइम, व्हाट ही डू विद दैट टाइम. अब कुछ भी नहीं है उसके पास करने को. ही वाज ऑन द मिशन failed, action, there were reaction, अब क्या. There is a free flow, he is just wandering in the city doing nothing really. So वो पार्क में जाता है, तो वहाँ पे लवर आ जाते हैं, एक लवर आता है, तो वो लड़की पहले इधर बैठते हैं, नहीं इस तरह बैठो, फिर वो कहता है डार्लिंग, तो कहता है क्या डार्लिंग, बस डार्लिंग. तो वो इरिटेट हो जाता है, डार्लिंग क्या डार्लिंग. और फिर बच्चे पतंग उड़ाते हैं, क्या पतंग उड़ा रहा है, क्या करे, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल दैट होल मोमेंट. एंड देन वो जब घर पे आता है, ही क्रिएट्स हिज ओन मैथोलॉजी. दैट इज आल्सो दैट, कौन सी वो फिल्म थी, रोशमोन इंटरप्रेटिंग वो है. देन द सेकंड टाइम आल्सो दैट गाय गोस, और फिर उसके पास जाता है तो उसके साथ भी कुछ होता है, लड़ाई वड़ाई, उसकी भाई उसको मारता है. देन ही इंटरप्रेट्स, और वो तो पूरा फिर सिनेमा को ट्रिब्यूट देने लग जाते हैं, सिनेमैटिक सॉन्ग में आता है, जो कि जो स्टाइल कितनी फिल्मों ने मॉडर्न में उसको कॉपी किया है. आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइक दिल चाहता है इज वन दैट केम टू माइंड. एक और छोटा सा मुझे लगा, दिल चाहता है हैज दैट ओपनिंग सीन वेयर आमिर खान का कैरेक्टर आता है और ये पूछते हैं आकाश तू तेरा वो टीचर के साथ चक्कर चल रहा था, एंड ही ऑल्सो मेक्स अ स्टोरी विच वी कैन सेंस ही इज हाइपिंग अप थिंग्स देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड. एंड आई वाज लाइक देयर इज 2 similarities. One like in the movie these 2 characters Omi and जोमो नाम होता है उसका, कि वो जगह जो एक्चुअली हुआ वो नहीं बता रहे हैं, वो अपना खुद का ही वर्जन बता रहे हैं. And that is so accurate because I have seen my male friends also like hype up their dates like nothing, and then मतलब ऐसा बोलेंगे क्या हुआ, आई मेरे पास आई, बात किया, मैं क्या, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं. एंड देन लाइक द नेक्स्ट टाइम यू सी द गर्ल, इट्स द गाय हु इज लाइक हाँ और क्या. मैं क्या, ये ऐसा तो लग नहीं रहा जैसे तूने बताया था. सो आई हैव सीन दैट वे टू मेनी टाइम्स एंड आई एम स्टिल लाइक अ फीमेल फ्रेंड. इमेजिन मेल फ्रेंड्स के सामने और क्या पढ़ाई चढ़ाई करके बोल चौड़ा बताना पड़ता है ना अपने आप को. सो दैट वाज लाइक आई थिंक ये और भी किसी फिल्म में था, बहुत फिल्मों में, लाइक आई मे बी आई एम कंफ्यूजिंग इट विद द डेविड धवन वाला चश्मे बद्दूर ओनली, जिसमें सेम चीज हो रही है. बट इनफैक्ट मैं जब ये देख रहा था देन आई वाज थिंकिंग कि अगर इस फिल्म को थोड़ा सा मैं अगर इसको रीमिक्स करने की सोचे कोई इंसान, एक कैरेक्टर है जो कि सुशील इंसान है, गुड गाय, व्हिच इज फारूक शेख. एक कैरेक्टर है जो कि हरामी है, लाइक राकेश बेदी, और उसके जो वासवानी है, तो वो है. एंड फिर एक एंड में कुछ फिर एक
एक सेल्समैन आती है, सेल्समैन से प्यार हो जाता है, फिर एक किडनैपिंग का सीन होता है, फिर किडनैप, अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इस फिल्म को और उनकी हेरा फेरी, बट इन दिस फिल्म दे हैड नो इंटरेस्ट इन मनी, उस टाइम में इतना कुछ इट वाज नॉट दैट अ प्रायोरिटी, तो उस टाइम पे लाइक 91 और फिर मनी का इतना ज्यादा होगा, दे वर कैरेक्टर डेस्परेट फॉर मनी बिकॉज उनके पास ललन मियां टाइप का नहीं था. ओनली पर्सन हु शुड हैव बीन डेस्परेट फॉर मनी वाज सईद जाफरी. ही लाइक वो मेरे मतलब भाई तेरा घर कैसे चल रहा है यार, सब लोग उधर उधर लेके जा रहे, नहीं इससे चिल्ला बैठ, कोई नहीं बेटा नौकरी लग जाएगी, तो मैंने बोला तो बाप है क्या है, किसी का बाप भी इतना चिल नहीं होगा लोन देने के बाद. Every scene of him and Farooq Sheikh starts with him asking him के पैसे दे दे, and by the end supporting him कि नहीं ठीक है चलो. And he also said सिगरेट मत पिया करो बेटा, and it's quite interesting, ये बहुत बार होता है, अगर आप थड़ी वड़ी पे जाओ ना, अगर आपको दोस्त मिल जाए बोले यार ये मत पिया, और मैं खुद भी बेचता हूँ, ऐसा होता है that concern. अच्छा, so it has happened like. Yeah, it's a very common thing. It's very common. बोले यार क्या पीते रहे, मतलब मैंने कोई फिर बोलता है कि अरे आपका धंधा तो इसी से चलता है, इसके बोले नहीं चलता है लेकिन अच्छी चीज नहीं है, मत पिया. पान वाला मुंह में पान होते बोलता है हमारा तंबाकू छोड़ो यार. It's funny how they have more humanity in them than the advertisers and marketers who sell these products. Of course, yeah. वो तो इसमें भी है ना कि देखो सिगरेट वाले खुद कहते हैं मत पिया. वो भी काफी ग्रोटेस्क होने लगता है. हाँ अब तो of course. But I was quite surprised the name drop of brands and everything. सिगरेट के ब्रांड के नाम बोले जा रहे हैं, जो भी है, कैंपा कोला है, डनहिल, मालबोरो है, सब बताया जा रहा है. I want to talk about, so this film I think embodies a very particular kind of bachelorhood, right? Yes. कि ये जो 3 लड़के हैं ये गज़लें सुनते हैं, बड़े गुलाम अली के रिकॉर्ड सुनते हैं, राकेश बेदी के साइड के वॉल पे रूमी के शेर लिखे हुए हैं या गालिब के शेर लिखे हुए हैं, बाजू में नंगू पुंगू बिकिनी. हाँ वो रवि बस like there is Freud bikini girl and mom photo, like what are you trying to say? जो कि आजकल करंट उसके अंदर they made it so pure that is कोई सुन रहा है तो गज़लों में ही है, और फिर वो कुर्ता पहन रखा है जैसे उसके दिमाग में कोई थॉट्स इस तरह के आए ही नहीं हो. इट्स सो प्योर एंड पॉइज, गुलाम अली ही सुनता है. I noticed how Farooq Sheikh in the beginning of the film he looks like Ranbir Kapoor's father in Wake Up Set. वो लग रहा है कि ये बाप की उम्र हो गई है इसकी. And then the moment he starts going out with Deepti Naval, suddenly कपड़े अच्छे हो गए. मैंने कहा ये तो भाई फैंसी कपड़े हैं यार, ये आज के ज़माने में वापस आ गया ये ट्रेंड, वो लॉन्ग स्लीव्स. और इनफैक्ट वो इनिशियली में जो गाना है वो बैंडी हसन का कौन सा धुआं क्यों उठा, सॉन्ग अबाउट धुआं, इनिशियली जब सिगरेट पी रहे हैं, और फिर वो सिगरेट का उनका वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पास करने वाला, पास करने वाला, और वो जो कोकोनट के अंदर उसको एस्ट्रे बना के रखता है, which is also interesting thing about and he empties it on the नीचे वाले के प्लांट के अंदर, ऐसे लगा अस्थियां फेंक रहा है, लाइक अपने फेफड़ों की अस्थियां फेंक रहा है वो नीचे, जब उसमें राख नीचे आती. But I was thinking कि like we have a certain idea of our parents' youth, right? Like college days, and it is this कि वो अपने कॉलेज के दिनों में गज़लें सुना करते थे. Like today you're like, when you think of like a college student, you're like अरे someone who listens to Pink Floyd, someone who's like very westernized in a way. आजकल तो बेबी काम डाउन वाले जो भी है, नहीं आजकल गज़लें सुनते वो इंस्टाग्राम पे सुनते हैं. मतलब ऐसा है कि अगर मैं गज़लें सुन रही हूँ तो मैं से लानत है मुझ पे कि मैं रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे ना डालूं. अगर मैं गज़ल सुन रही हूँ वो फिर मतलब ही नहीं है गज़ल वालों का. हाँ, और गज़ल में पता है और एक चीज़ के लिए यूज़ होती है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टुडेज टाइम. सी व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स और व्हेन समबडी इज गोस्टिंग यू, देन यू पोस्ट अ गज़ल व्हिच इज वेरी सिमिलर टू योर सिचुएशन, सो दैट द पर्सन गेट्स क्लिक बेटेड कि oh this is about me, but that person will never get click baited. It's always some 2 other people who you have no interest in, they will get click baited. They're looking at the गज़ल. मैंने एक बहुत फनी जोक पढ़ा था, उस पर ट्वीट पढ़ा था, उस पर लिखा था गज़ल सिंगर थिंक्स देयर आर 52 hours in a day. पॉइंट पे आओ यार. एक वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पाकिस्तानी कॉमेडियन आया करता था काशिफ, उसने ये कवाली के ऊपर जोक मारा था कि मैं कवाली का प्रोग्राम देखने गया, मेरे सामने जो साहब बैठे थे वो बाल कटवाने चले गए बीच में, वो बाल कटवा के आ गए. मैंने कहा यार आप क्या बेहुरमती कर रहे हैं, आप कवाली का प्रोग्राम चला बाल कटवाने चले गए. तो कहें क्या करूँ, जब आया था तो इतने लंबे थे ही नहीं. So yeah, और वो एक और जॉनर है ना, like you take a ghazal and you put it on a romantic Hollywood film to
to show your cinephilia कि वो before sunrise sunset का scene लेंगे और उसमें गुलाम अली चला देंगे. Before sunrise में वो दोनों डायलॉग है कि oh my god I'm feeling things for you. होश वालों को उनको नहीं है खबर ये तुम क्यों ये होश वालों क्यों सुनाई दे रहे. I don't know why that's the नहीं तो वो उन्होंने गजल का भी एक स्टीरियोटाइप को भी I think they broke किया. गजल सुनने वाले हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे. But complex रंगीले कैरेक्टर. फिर और एक ये भी कि अगर कोई गोरी सीन हो रहा है जिसपे कोई किसी की आँख फोड़ रहा है तो उनसे नजर क्या मिली. But like none of these three are alpha males. They know who they are. Like these are the kind of boys you will still find. कि वो छोटा सा वो एक है कि एक फेल होता रहता है, एक नौकरी नहीं कर रहा क्योंकि उसको और पढ़ना है, एक के पेरेंट्स नायरोबी में रहते हैं. So there is that. Baswani is trying to be one. Like that's the sense I got. To be the cool. They're trying to be cool, but they're not alphas. Alpha male in what sense? Like in the animal sense or in the reptile sense? I don't know. In the normal sense. Like I relate more with such men than the hero of Hindi cinema. Yeah. That's true. Yeah. And also interesting, they are studying at SRCC और किसी के पास पैसा नहीं है. It's a commerce college. And nobody is excited about. So SRCC, Miranda House and Daulat Ram College get name dropped in the movie. Yes. That I realized. And I think that the location was Defense Colony. Okay. Where their house was. Achha. It became very, now तो अभी काफी हाई-फाई हो गया, but yeah, at that time it was Defense Colony. It's shot in and around what is called Lutyens, right? I think South Delhi mostly. Okay. Yeah. There's also some ruins in the background. मुझे दिल्ली इतना पता नहीं है, so that's why. हौस खास I think वो है, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है हौस खास वाला एरिया क्योंकि उस टाइम पे काफी शांत हुआ करता था. Exactly, हाँ, जो हिपस्टर सेंट्रल नहीं बना था जो. And very interesting कि इसमें वो भी नहीं है, धुंध भी नहीं है. There's no pollution. Yes. Very clear sky. I noticed something interesting. Sai Paranjapye is the only second female director we are discussing after Zoya Akhtar. Like in between, we've not discussed any film by a female director. And I was noticing this in the small things like ये दो लड़के हैं, लोफर हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं. But there is a certain difference from they don't come across as, they're not lecherous. Yes, which is quite interesting because there is a line which can be crossed. Correct. Yeah. Still, yeah. What did you feel about that? So I feel what I felt like from the what I got from the whole film was that like you said, this film is very meta. Yeah. She is trying to make fun of the traditional Hindi cinema, but towards the end you realize कि इसने भी हिंदी सिनेमा वाली सारी हरकतें कर तो दी. मतलब वो दोनों कह रहे कि ये वो हिंदी फिल्म्स में देखो ना कैसे दोनों लड़का लड़की पार्क में गाना गाने लगते और उन्हें सब शब्द याद भी है. And then after a point they also start singing a song because they feel like they are supposed to. So they are making up words as they go. उनका वो improv show चल रहा है वहाँ पे, गाने वाने गा रहे हैं. एक तो वो एक चीज़ होती है. Second thing that happens is slut shaming. So like that's अच्छी like लड़की नहीं है ये, हम उसके घर उसके बेडरूम तक जा चुका हूँ. Even though like yes. So what that I feel is my favorite scene of the film because like you said it could have gone either way. He could have said तुम जैसी अश्लील लड़की है etc bad words, but he was like कि तुम मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना, and he just leaves. He didn't say anything like that. He was just like thinking कि oh fuck, उसने जो 2-3 डिस्क्रिप्शन दिए थे, एस्ट्रे ऐसा है, बाथरूम के पर्दे ऐसे है, वो सब था, सेम था. सो दैट इज इट. लाइक देयर इज नथिंग अबाउट लाइक ही डजंट इमेजिन हर विद देम. लाइक ऐसा मतलब वो उसको गाली नहीं दे रहा है कि ओ तू कुल्टा और आई डोंट नो व्हाटएवर वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट दैट वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड आई थिंक विद इन 20 मिनट्स वो रिजॉल्व भी हो जाती है. हाँ. फिर उसके बाद वो भी नहीं है गुलशन तो अब तो हाँ वो एक है. एंड देन उसके बाद एंड वाला सीन वो जब भी गुंडे पकड़ के ले जाते हैं, एंड इवन दो लाइक ऑल ऑफ दैट इज सपोज्ड टू बी स्टेज, बट देन अल्टीमेटली वो रियल हो ही जाता है बिकॉज एक्चुअल गुंडे पकड़ने आते हैं. So that I really liked, and also like I like how in that little moment, in that 20 minutes का time frame जब भी वो दुखी रहता है, देवदास रहता है, he goes back to his original dressing sense. वापस the long kurtas are back in that time. He's back to being Ranbir Kapoor's papa. Leaving the soul, changing the soul basically. Changing the soul. From the lover to yes. loafer. So I feel like maybe I like to, whenever I'm dissecting a film, I like to think कि ये writer ने क्या सोच के इसको idea आएगा. So I feel like उन्होंने भी सई परांजपे जी ने भी काफी हिंदी फिल्म्स देखे रहेंगे, and she would be like there is something wrong with this is like a pattern. In fact in the opening credits the
last credit when it comes directed by, if you see there is a man, 2 hands of a man, and then a woman's hand comes, pushes it and does this, and then it comes Sai Paranjapye. yes. So yeah, that was also very beautiful. Even in the end ना वो अचानक पुलिस आ जाती है, कानून को हाथ में मतलब. It's the most Hindi film ending as you can imagine. Yeah. To not get to not push the society to anarchy. They think that like the police should have the monopoly of the violence. So that But in the end, kidnapping is also a callback, right? There are वो अखबार में उनको सेठ घनश्याम दास की लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, वो आ रहा है, and they're the same taxi driver is the same who is kidnapping girls. So there is even that little thing. And even जो टैक्सी ड्राइवर लल्लन भाई को लेके आता है, वो भी एक सीन में है सिगरेट खरीदता हुआ है जब फारूक शेख वहाँ होता है. तो देयर इज अ रिलेशनशिप देयर कि वो अगर चाहिए होगा तो वहाँ जाएगा. सो या, बट यू वर टेलिंग मी साई परांजपे हैज डन सम मराठी वर्क in She hasn't done some Marathi work. Her mom was an actress. And because she's a Maharashtrian, so I'm guessing that she must have also consumed a lot of Marathi cinema. By the way, her daughter is also in the film. वो जो एक पिंक ड्रेस में खड़ी हुई होती है लड़की और ये स्कूटर पे जा रहे होते हैं, फिर वो उसको छोड़ के वापस आता है. That's Sai Paranjapye's daughter. Wow. That's why we were discussing before also that the whole film also, I mean, feels like a play. Correct. Yeah. It's like a stage play kind of an energy. Then obviously you told me that she's from NID, so there is also that influence of the theater in this film. So that's why it's, I think, more relaxed, more dramatic. In the sense. Even the dialogues are also like that. She's an NSD graduate and she has directed a bunch of plays. Okay. So that's where I thought I read this somewhere and I was like, okay, that is where this comes from, the whole play-like setting. But yeah. Sai Paranjapye had a spate of films during the 80s which again are looked back on fondly. I don't know if they worked when they actually released. There was Katha. Katha was brilliant. Is really good, in which Farooq Sheikh plays an asshole, like in one of those rare roles where he's not playing a nice guy and he totally pulls it off. That start off with the credit scene is about Kachwa and na? Correct. Yes. Slow and steady wins the race. और चाल वाले जो लिविंग होती है, that film I think is set in Bombay. Yes, and of course Sparsh we mentioned. The last I think impactful film that she did was Saaz, which was Shabana Azmi, Zakir Hussain, the tabla wadak, and one more actress, I'm forgetting her name, and it was I think roughly based on the relationship between Lata, Asha and R.D. Burman, like that dynamic, because they are playback singers in the film as well. I really liked it. I think she's one of the greatest filmmakers in Indian cinema, and it is quite sad that she didn't get. That's what I was coming to. Kind of thing when she made that those. She should have. People should know the name. Who made the film? Like I was discussing with where I was staying there. नहीं चश्मे बदूर साई परांजपे कहाँ है तो किसी मैंने कहा come on मैंने तो नहीं मैंने तो research किया साई मैंने क्या research किया. So basically that name is not that recognizable as compared to let's say शायद बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी या इनकी फिल्में जो थी सलीम जावेद इन सब के नाम जितने. So yeah, that is also quite. आई थिंक वो कल्चर होता भी है ना कि आपने भी देखा होगा कि मैंने बचपन से मैं रियलिटी शोज अवार्ड शोज देखते आई हूँ. सो उसमें भी सटल चीज़ें होती है ना कि अभी जैसे जावेद अख्तर स्पेशल कोई एपिसोड होगा, अमिताभ बच्चन स्पेशल एपिसोड होगा, कि किसी फिल्म का संजय लीला भंसाली स्पेशल एपिसोड होगा, या इवन बात करते टाइम पे भी somebody will certainly plug in कि आई वांट टू मेक करण जौहर काइंड ऑफ सिनेमा, आई वांट टू मेक संजय लीला भंसाली काइंड ऑफ सिनेमा. सो इवन द साई परांजपे हैड हर ओन ब्रांड ऑफ सिनेमा. मुझे पता नहीं पुराने ज़माने में कोई बोलता होगा कि नहीं, बट आई तो हैव नेवर हर्ड कि साई परांजपे काइंड ऑफ सिनेमा. ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी फिर भी सुना है, बट ये नाम नहीं सुना. अगर नाम आए भी तो तीसरा और चौथा उस पे आएगा. किसी ने एक ट्विटर पे ये डाला था, हैव यू बीन टू पीवीआर जुहू? जुहू वाला ये जो एक शॉपिंग है उसके उसके ऊपर है. तो उसके वॉशरूम में दे हैव पिक्चर्स ऑफ आइकॉनिक फिल्म मेकर्स इन द वॉशरूम. So I obviously have only been to the men's washroom, and you have Francis Ford Coppola, Scorsese, Satyajit Ray. तो किसी एक ट्विटर पे a lady had put that even in the women's bathroom it's all male filmmakers. So यहाँ पे इनको एक फीमेल डायरेक्टर भी नहीं मिली कि उसको फीमेल उस पर डाल दे. तो वहाँ भी, and I think the weirdest thing is कि वो वुडी एलन का फोटो डाला हुआ है उन्होंने. But strangely मैं नोएडा में I went to
थिएटर वहाँ पे एवा डुवर्ने का ओह रियली बड़ा सा, मैंने कहा नोएडा में, मेरा दोस्त काम करता है उससे, मैंने कहा यार देखो ये नोएडा में मिली, मतलब उसको समझ नहीं आएगा नोएडा में मिलना कैसे बताऊँ, टेक्सास के किसी गाँव में आपका फोटो लगा हुआ ऐसा मान लो. Yeah, so Ava DuVernay makes a lot of stories about African Americans and black people. So yeah, we were quite surprised to see her photo, Noida Sector 62. Yeah. She was the head of jury in one of the editions of Mami. So yeah, she's been to she came Bandra. at that time to India. Yeah. Okay, we have to go into a quick break. When we come back, we'll talk a little bit more about Chashme Buddoor, and I have a few questions for Anurag. So we will talk about all of that and a little more. If you're watching us on YouTube, please like the video, subscribe to the channel, and share it with someone who you think will enjoy it. If you're listening to us on an audio platform, please rate and review us. It helps us reach more people. We'll see you on the other side of this break. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by actor, TV presenter and ex-VJ Gaurav Kapoor. The two of them revisit the first time they met, Gaurav's first-hand account of meeting the legend Sunil Gavaskar, as well as the inception of his acclaimed show Breakfast with Champion. On The Habit Coach, Ashton Doctor welcomes actress Hansika Motwani to talk about her journey as a child actor, emphasizing the importance of hard work and resilience in the face of challenges, and how her disciplined approach extends to both her professional and personal life. Folks, if you like our shows, spread the word. Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Omidyar Network India, IDFC First Bank, and ICICI Prudential Mutual Fund. Thank you for making this possible. And we're back on Has It Aged Well. We're talking about Chashme Buddoor from 1981, directed by Sai Paranjapye. With me in the studio to discuss are Urjita and Anurag. Urjita, you had a quiz for us. Yes. Quiz है. Yes. तो ये सीरियस नहीं है, मतलब चिल क्विज है, रैपिड फायर नहीं है, एम्पर नहीं हमारे पास। ये कैसा है कि ये मैं ऐसे सवाल ढूंढ लाती हूँ जिसके जवाब सिर्फ मुझे पता है, और अगर आपको पता हो गया तो इट्स बोनस, इट्स अ बोनस। सो नंबर 1, ओके, इजियर वन, कि वो जब भी वो बाग में रहते हैं दोनों, तो तभी बैकग्राउंड में वो एक भालू और उसका वो चल रहा रहता है नाच गाना, तो देन वो जो आदमी है वो ही सिंग्स अबाउट द भालू, कि उन्हें भालू दुल्हनिया लेने आया है, लेके जाएगा, व्हाटएवर। तो उसमें ही मेंशंस कि उसने जो सूट पहना है वो किसी मटेरियल का है। व्हाट इज दैट मटेरियल? ये आई थिंक वो टाइम पे ये मटेरियल फेमस था। भालू ने सूट पहना है? हाँ, भालू ने, हाँ, और उसको मेंशन भी करता है कि पहन के आया है ये डैश का सूट। वेलवेट? नो, वो तो नहीं कि कश्मीरी जो, नहीं वो भी नहीं। इट्स एन इंग्लिश नेम ओनली। कैश्मीर। पता नहीं, टेरिकॉट। कभी सुना नहीं मैंने। हाँ, टेराकोटा सुना है। टेराकोटा वही है, वो टेरिकॉट बोलता है, सो दैट्स हाँ, व्हाई। अच्छा, ओके। टेरिकॉट। बाय द वे, यू नो, आई हैव सीन वन भालू वाला एट चौपाटी बैक इन द डे। ओह अच्छा। वो भालू लेके घूमते थे, एक्चुअल भालू। वो कुछ तो पता नहीं वो ब्रीडिंग में क्या होता है, वो द भालू इज मच स्मॉलर एंड मोर मीक देन अ नॉर्मल भालू। तो क्या करते थे? वुड दे प्ले डेड इन फ्रंट ऑफ? नो, दे वुड मेक हिम डू ट्रिक्स एंड ऑल। उसको कुछ दिखाता था तो फिर वो कूद के पकड़ने की। No. Would they play dead in front of the bhalu, just so that the bhalu doesn't attack and them? Go away? Yeah. Okay, next question, please. Wow, not a big fan of childhood stories, I see. But हाँ, तो second question थोड़ा easier है कि वो फारूक शेख जो है, he mentions that उसका probationary period है, वो खत्म होने के बाद he'll feel थोड़ा chill. How long is this probationary period for? 3 months? No, it's not 3 months. वो टाइम पे थोड़े लंबे होते थे। मैं नहीं बता रही लंबे या छोटे। कैसे बताऊं? 1.5 साल? नहीं, ऐसे तो 1.5 साल कैसे? ब्रिटिशर्स के हाथ में। मुझे लगा यू लास्ट के वो बोलता है कुछ मैंने इसमें एमए किया है, मुझे लगा यू लास्ट विद सब्जेक्ट ही डिड एमए। पता नहीं, 1 महीना। 1 महीना? ओह, ओके। Okay, third one. काफी टफ क्वेश्चंस लेके आए हो आप इस बार। Third one is we already discussed this, but still, which director didn't allow Sai Paranjapye Sparsh to release? Oh,
Didn't allow. Yeah. Basu Chatterjee. Basu Bhattacharya. Why? हाँ, because he was producing it, so he had blocked it, मतलब from getting released. He's like, नहीं मैं होने ही नहीं दूंगा. So some reason, and then Naseeruddin Shah and Sai Paranjapye had a bunch of actors had to protest to get the film out there. Naseeruddin Shah इतना पुराना है? हाँ. Yeah. स्पर्श में वही तो था. Yeah. Nasir recommended Ravi Baswani to Sai Paranjapye for this film, which is why she took him without auditioning him. So yeah, that's and this was Ravi Baswani's debut feature, so उसमें आता भी है लिखा हुआ. Who then went on to of course make जाने भी दो यारो with Naseeruddin Shah. I have fourth question, last question. You might have noticed this also. जब भी अमिताभ बच्चन सीन में आता है तो he's reading a newspaper. तो किन की फोटो लगी है on the front page? हेमा मालिनी? No. Is it a actor? It's an actress only. Yeah. नहीं पता, बट एक डायलॉग याद आ गया. क्या? कहता है मैं कास्टिंग करने आया हूँ और जया भादुरी के बाद एक वॉइड सा आ गया है. Also on the wall जिसपे औरतों की फोटो लगी हुई, there's a photo of Shabana Azmi, which I thought was a little like you don't consider as a siren, but I felt like वो थोड़ा inside joke ही होगा कि चलो शबाना तुम्हारी भी लगा देते हैं. Anyway, उनकी अलग से लगी है और अच्छी काफी स्टाइलिश काफी फोटो frame में. It's like फोटो ऐसा है. Was Javed Akhtar the lyrics writer? No, I think Javed Akhtar happened much later. Okay. I think he must have looked at that photo and thought, actually my wife is also kind of hot. I can write romantic lyrics on her. Okay, the headline was Can XYZ act? Oh. So this was Rekha? like no. This was probably an actress जिनके acting के ऊपर थोड़ा doubt मचता होगा, I am guessing. अरे बाप रे, नहीं पता. Indira Gandhi? That time it was okay. Zinat Aman. Okay. Yeah. Oh, अच्छा, okay. Yeah. Interesting. Yeah, so title था Can Zini act? अच्छा. So Okay. yeah, that was the quiz, guys. कोई There is an Indira joke somewhere in the joke नहीं है ना, एक नेम ड्रॉप है कि अगर इंदिरा जी भी बुलाएं तो मैं छोड़ के ना जाऊं, ऐसा कोई तो कहता है. प्राइम मिनिस्टर भी बुलाया. I don't think he said Indira. ओह अच्छा, तभी भी उन्होंने they played safe back then. But so of course Chashme Buddoor was then made years later, remade years later in 2013 by David Dhawan, who's also an FTII pass out. So and the film apparently the remake was in development since 2005. Onir had taken the rights to remake the film and Sai Paranjpye was going to script the remake, an updated version, but वो कभी हुआ नहीं. So obviously I have seen the remake, you've also seen the remake. I'm assuming Anurag you have also. No, you have not. Okay, but when I look at the poster, I cringe, to be honest. but I saw it in theaters actually with my mom and dad, and it's exactly what you think. It's updated for 2013. It has all the trappings of mainstream Bollywood in 2013. Everything is very mechanical. You were talking about the form of film. There is a certain sort of fluidity and freedom that you see in this kind of cinema from back in the day, which seems to have gone away. Everything seems to be very methodical, very, for lack of a better word, like fake. In today's films, More than fake, it's almost so tight. Like the whole experience of cinema, like every second counts, and you have to be. In fact, back then they were making film on the film, like the film, where Correct. can't waste that much of it. It's very expensive. Yes. Now people are making it digital. Yeah. But the whole essence of the cinema or any art form lies in the idea of being playful. Correct. Being playful with the form, experimenting with it, having some kind of a childlike curiosity about what the medium can itself bring. So that idea this is one of the reason I don't see in cinema, be it in the mainstream cinema or be it in the independent cinema, art cinema. Why do you think that's happening in independent cinema? Mainstream, sure, we can make the argument that there's too much money involved and it's too much at stake, so they're playing it safe. But why do you think, considering Chashme Buddoor can also be considered, original one can be considered an independent film, why didn't that carry forward? I think there is certain, I don't know, especially in the contemporary India, that whole idea of like, if you are making some kind of a serious face, if something is serious, there should be no music, Shok Sabha, that is considered art film, independent film. It's not like that. If you look at the history of independent, even the art films, many of the art films were very experimental in nature. Yeah. Om Darbadar, Amit Datta's film, some of the Manikov's films. Even many filmmakers back then were making films which were like very playful with the form. But now they are also playing safe. So
this is one of the reason I don't like that whole idea of like courageous filmmaker. For me, the courageous filmmaker is not something who made in film on some like let's say against the government or some issue, and that's a basic kind of filmmaking, template based filmmaking. In that also you are very much sure that there is certain kind of audience who like your politics will be with you. Correct. But the courageous filmmaker is lost in the dream and making something, and that filmmaker knows that if I break this form or do something with this, then there is a possibility that no one will get it. I might not be, celebrated as the person who is, breaking the shackles of fascism one film at the time. But still, because of that creative conviction is so much that the person is ready to have that courage that it might people might not get it, but there is certain beauty in it which I will pursue. So that thing is missing. Now it is very safe filmmaking, even in the independent film, especially in the independent which we see very safe kind of filmmaking. The whole idea, the whole form of it has to be very very so soft, slow, like this, purity. अगर किसी का गुस्सा दिखाना है तो तुम मतलब पानी उबलते हुए नहीं दिखा सकते 20 मिनट तक. मेरा यही मानना है. गुस्सा दिखाना तो तोड़फोड़ करते हुए दिखाओ, पैसिव अग्रेसिव होते हुए दिखाओ. There should be some life in it, like this experience. It should be alive. Right now the cinema feels dead totally. I feel alive when I go to YouTube and I see look at some random videos. I feel alive. There's some life. There is some image. There is some cinema. In cinema there is no cinema in the contemporary. Did you watch Rocky Rani Ki Prem Kahani? I watched it. I kind of liked it. Even I liked it. They were quite interesting. It was a lot of fun. वो एक उसका डायलॉग बड़ा फनी है. कुछ तो कहता है कि मैं तो वोट देता रहता हूँ, वोटिंग किसमें गया बोले बिग बॉस में. वोट करने का क्या फायदा, शमिता तो है नहीं है. शमिता हाँ बिग बॉस, और फिर वो गिरा देता है. Then there's that thing Shamita, and then he asked क्या कौन सी constituency से लड़ती है. नहीं Shamita. There was some fun. There was some fun in the films, like it's little alive. Right. And also they were also exploring things alongside, not keeping it. So yeah, it was an interesting film, I would say. Is that a failing of our institutions which teach filmmaking? Obviously it is the institution, and in fact any kind of cinema to survive there has to be a certain kind of ecosystem at least where you can get influencers, meet people, what are the people. So there should be some kind of a ecosystem. For example, in earlier time there were at least like the funding opportunity you'll get from NFDC. They wouldn't itna pareshan nahi karenge, ye bana. There were some things were happening. Cinema movements were there, many kind of cinema movement fundings were happening. So there was something interesting going on. But currently also that whole idea of independent has also gone. Now it's the OTT thing, so they has to follow a certain narrative, certain thing. So we call independent now are the OTT films. They are backed by the big producers, and they want certain like hits. It has to hit. This second पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, इस point पे क्या आया, tell us. Even the whole idea of writer level, अच्छा आगे क्या हुआ, अच्छा गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में अगर हम पीछे इस political की photo डाल देंगे थोड़ा profound. So, I mean it's not the auteur kind of stuff which is happening, like the filmmaker is really following certain kind of vision. It is just messed up currently. It's a committee which makes the film. It's like it's more of a project kind of thing. There's no life. क्योंकि डर भी तो है ना थोड़ा कि कैंसिल हो गए, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे. Possibly, and it is only going to increase unless. Also, I think it's a cultural thing. For example, Iranian cinema, we people talk a lot about Iranian cinema. Then people say, why don't, like there was a clip which went viral. Iranian Urjita saying that 12th Fail is very good. I think Indian cinema is the best. But other guys, we don't make film like Iranian cinema. But I think both point of view I found little basic, because this even about the second person who was saying that Iranian cinema, it's not like we don't make it. There has to be certain cultural context of it. So Iranian cinema is great because there is essentially the idea of poetry is very strong from the Persian time. So when you see the film in the basic frames, you see certain kind of poetry. That is because it is embedded in the daily lives. It is embedded in the culture of the people and these filmmakers. So that's how you see those kind of films, which looks very beautiful because they are product of that cultural scenario. So in India, that cultural scenario is different. We are not producing that kind of literature which can influence good films also. Like you have to also look at it, the whole ecosystem, what kind of artwork are producing around cinema which can influence cinema. So which is not happening. So there is a shallowness everywhere which is impacting it. So that is the thing. So you can't just say Iranian doesn't come like that. You've
copy the form and it became Iranian. Then we'll make a film which are too desperate to be poetic. वो कहेंगे हाथ जोड़ के बोलती है कई फिल्म में तो भाई poetic हो यार, poetic बोलने टाइप का, तो it doesn't happen like that. There has to be cultural context of that. So वो इसीलिए मतलब चश्मे बदूर जिस पे हम बात कर रहे हैं, the beauty is the idea of a courageous film which is, and the idea of joy which is very central to the film. Like the filmmaker is having fun in the process. Fun while making it. Not thinking कि इसको कहाँ जाना क्या जाना, but the whole fun, and you can see the fun. That's why we feel so joy whenever we watch that film. We also feel the joy because the filmmaker is also feeling that. Like watching some films like Chashme Buddoor and all, you can actually see कि अच्छा ये take के बाद अपने वैनिटी वैन में नहीं गए रहेंगे, ये साथ में मिलके चिल कर रहे रहेंगे, इन्होंने एक्चुअली जैम किया रहेगा डायलॉग्स के ऊपर कुछ. तो आई लव द काइंड ऑफ डायलॉग सीक्वेंसेस वेयर यू कैन सी कि ये इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकता है यार. वो द कास्टिंग ऑफ द वेटर एट द टूटी फ्रूटी वाला जो वेटर है यार, क्या मिलेगा यार, माहौल अच्छा लगेगा. And then they break the fourth wall for the interval. अच्छा interval के बाद लाता हूँ, and then that happens. And then of course Saeed Jaffri's casting, like he's kind of like the secret sauce that makes the movie, right? कि अगर ललन मियाँ ना हो तो कहीं ना कहीं somehow that affects the other three boys also, because it's their interaction with Lalan Mian which is also making us root for them. And again, like you mentioned, Lalan Mian, despite being for lack of a better word, the father figure, is strict but also lenient with them. And then he's the one who in the end brings the police and sets everything right. It's basically a moral glue in that film, binding the moral glue of each character. And he's selling cigarettes to people. Also the ambassador of death is the moral force in the film. Very interesting irony. पता चला ललन मियाँ पुलिस लाए थे कि यार ये देखो सारे मेरे पैसे ले वापस नहीं कर रहे हैं. पता चला ओ यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है एक्चुअली. वो बोलता भी आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, बोला आप सिर्फ पैसे अदा कर दो, उधार अदा कर दो. I want to talk about Deepti Naval. So again, she's the central female figure in the film, and she's obviously really good. This film sort of kickstarted the Farooq Sheikh Deepti Naval pairing, which we saw in a lot of other films. Did they ever date at any point? I mean, I don't know. I haven't read Deepti Naval's autobiography. I don't know if you said anything in this. By the way, Sai Paranjapye has written an autobiography which came out I think 2 years ago, which I think is recommended reading for everyone, that you should check out. एक वो सीन है जब वो उसे कहती है सिगरेट मत पियो, या उससे पहले वो उसको कुछ कहता है, एंड शी आस्क्स क्यों ना करूं, एंड ही सेज क्योंकि आई एम गोइंग टू बी योर लॉर्ड एंड सेवियर, राइट? That kind of, again, I thought that how would a male filmmaker have played this scene where clearly you see the Farooq Sheikh character who's supposed to be the kindest of the three, but he's also still deeply patriarchal, where he's like मैं पति बनने वाला, तो जो बोलूँगा करना पड़ेगा तुम्हें. I think that was really But she also questions it, and also like that scene, I was about to like take offense कि अरे ये क्या हो रहा है, and then it immediately cuts to कि अभी then she asks him कि अच्छा तुम सिगरेट पीते हुए चलता है, तो फिर कह दो तुम छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा. क्या बात कर रहे हो, मैं कह दूँ तो छोड़ दोगे? हाँ तुम ट्राई तो करके देखो, छोड़ दो, ये लो छोड़ दिया. And you can see that he was ready to do that all his life, because he had also ललन मियाँ को बोलता है ना पहले, बोला है कि अरे जब तक कोई लड़की नहीं बोलती तब तक कैसे छोड़ो. And that is also I feel like a gentle hat tip to like all the Hindi cinema that was going on at that time कि मुझे तुम सिगरेट पीते हुए अच्छे लगते, लो छोड़ दिया. लड़की मिलना was considered as an order. Order as in like the disorder to the order, like that it's complete chaos, disorderly your whole life, and you think बस एक लड़की सुंदर सी लड़की मिल जाए फिर लाइफ सेट हो जाए. So that was that wisdom back then. So बोला हाँ सिगरेट की गंदी आदतें, दारू की गंदी आदतें, ये सब छूट जाएंगी. पेरेंट्स बोलते हैं कि 10वीं पास कर लो सब ठीक हो जाएगा, लड़का बिगड़ रहा है इसकी शादी करा दो. शादी like Imtiaz Ali thought he did it first. No my boy, you didn't do it first. एक चीज़ मेरे को बहुत फनी लगी जब फारूक शेख को पहली अपनी सैलरी मिलती है, एंड ही क्लियर्स द he breaks it to Lalan Mian that he's going to ask Deepti Naval to marry, and he gives him cigarettes, and he's like मैंने तो छोड़ दी पर दे दीजिए काम आ जाएगी. Then he goes to Rakesh Bedi and Ravi Baswani, and when he's about to tell them, he gives them cigarette and he's like के अरे पहले मुंह तो कड़वा कर लो. I thought that was quite funny. That was so funny. There is the sorry.
जस्ट लाइक अ बंच ऑफ फनी डायलॉग्स इन द फिल्म कि वो वाला भी आपने दुश्मना देखी है? हाँ, क्या ओरिजिनल स्टोरी है, 2 बिछड़े भाई, एक पुलिस ऑफिसर और एक स्मगलर, काफी संजीदा कहानी है. दो जुड़वा भाई कहती है, उसने दीवार का प्लॉट लेके बस वो जुड़वा बना दिया. So funny. Also, one thing, I don't know, I googled this, I couldn't find this anywhere, but when Farooq Sheikh goes to give the interview, जो उनका इंटरव्यू लेने बैठे हैं, उसमें से I think एक सईद अख्तर मिर्जा है, who went on to make सलीम लंगड़े पे मत रो. Yeah, but I googled this, I couldn't find it anywhere, but I feel like it was Saeed Akhtar Mirza, which is very possible because they all come from the same. I made a meme on him one day. Oh, really? Only meme in the world made on Saeed Mirza. What was the meme? He's saying something, so like it title मैंने डाल दिया उस पे, तो like why people from FTI don't get any match on Tinder. Then Saeed says, oh, Ozu, Salini, Khatak, Ray. That is the only meme on Saeed Akhtar Mirza. Nice. Why do you think the film is called Chashme Buddoor? Because वो एक चश्मे बदूर essentially जो उनके दरवाजे पे जो स्टिकर लगा हुआ है, which is like बुरी नज़र वाले तरह मुंह काला टाइप का जो चीज़ होता है कि और दूसरे उसके साथ में लिखा है कुत्तों से सावधान उनके उस पे. Yeah, that is the translation also, no, of Chashme Buddoor, ward of the evil. हाँ, exactly. So why do you think the film is called that? Because बुरी नज़र इन दोनों दोस्तों की थी, and then ultimately they get a lesson, no? As in they don't get a lesson, but then yeah. But इसका पता नहीं, but there was very interesting thing which I read कि you should respect people who wear glasses because they are literally paying to see you. Oh yeah. Have you seen that song, original song? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में है. So when you're watching it, तो अचानक, what is his name? The guy who comes, खान, फिरोज खान. हाँ, फिरोज खान एंटर्स, वो गाना, तो पहले वो आता है चुपचाप, फिर ऐसे आता है, फिर उसका शॉर्ट्स आते रहते, बीच में वो एक्सप्रेशन करता है ऐसे करके. तो ये जो होता है ना इसमें, जब वो आता है, जब वो ट्रांसलेट करते हैं, वो बहुत फनी सा एक्सप्रेशन ऐसे करके, वो एग्जैक्टली वही करता है, सिर्फ वही शॉर्ट मैन. तो वो उस पे इतना फनी लगता है मेरे को. वो भी सीक्वेंस आई रियली एंजॉयड कि मतलब वो हर एक गाने का कर रहे हैं. देयर इज आप जैसा कोई, देन देयर इज व्हिच अदर सॉन्ग, और काफी सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं. एंड देन इट केप्ट गोइंग ऑन, लाइक व्हेन विल इट बहुत सिनेमा में. हाँ, इट केप्ट गोइंग ऑन. उनको कुछ वो ही नहीं था, लेट इट गो. आई एम गेसिंग कि लाइक थिएटर में वो वाले पोर्शंस पे काफी ज्यादा अपलॉज ब्रेक्स मिल रहे होंगे, बिकॉज़ फॉर देम इट्स लाइक मेटानो. उसके अंदर भी था बाय द वे, छोटी सी बात है ना, लाइक दीस टू फिल्म आर वेरी मच सिमिलर. सो उसके अंदर भी था, जब वो जाने मन तेरे दो, वो थिएटर में जाके इमेजिन करता है. ही सीज हेमा एंड धर्मेंद्र and imagines himself, which again reminds me that Rekha and Amitabh are in this film, and then we have spoken about in that film कि वो भी guest appearance कर दिया करते थे ऐसी फिल्मों के लिए जो उतनी mainstream नहीं. उसका टाइटल देखोगे तो उसमें लिखा है दोस्ती में, फिर नीचे उसमें भी हार जीत में भी जब वो देखता है तो the camera zooms in on हार के ये मार खा के आया है. So yeah, I think it was a much more homogeneous time where these actors would also not feel it's against their ego or whatever to make a little appearance. Because Amitabh is also in Chhoti Si Baat. वो कर्नल का जब ये जो legitimize the कर्नल character, he's giving tips to Amitabh कि अमिताभ बच्चन को जो ट्रेन कर रहा है वो तो तुम्हें तो कर ही देगा. Because it might not be hardcore, let's say Hollywood kind of professionalism that was existing. It was very loose. So that's why films were also loose. But now, since that became like hardcore profession kind of a thing, now I think film also became like that, very very tight. Yeah. But I like that Amitabh and Rekha scene. Like it seemed very natural and also it seemed very funny. Sounded funny also. कह रही है देखिए हाथ, ये आपका रुमाल, ये मेरा, अरे दीजिए अपना हाथ, चलिए. There was very. I think he sounded, maybe I haven't watched enough films of Amitabh to come to this conclusion, but he sounded way more charming in that one scene than I have ever seen actual him. films. Yeah. Okay. Yeah. I find his
ह्यूमिलिटी का जो एक्टिंग है ना, वेरी इरिटेटिंग। अरे भाई हम तो आप राजा, हम तो रंग है भाई। अरे नहीं भाई, आवाज में बेस जो है ये हमारा नेचुरल है, उधार ले आए। अरे मैंने कब कहा, मैंने हमारी श्रीमती कहती तो खाना बनाना पड़ता है, वो तो हम तो बनाते हैं भाई, श्रीमती से मार नहीं खाने में। क्या बोल रहा, कुछ भी बोल रहा। मतलब he's officially retired from KBC now, right? Yeah. He's making KBC, not making. नहीं ऐसे He hasn't retired. KBC is stopping. अब KBC देवी और सज्जनों आखिरी बार ऐसे करके साइन ऑफ किया उसने लास्ट सीजन पे। तो बिकॉज़ मेरा भी सपना था केबीसी में, आई वाज प्रिपेयरिंग फास्टेड फिंगर। अरे वो तो हम सबका सपना हुआ करता था। तो बोल के रखते थे ना, देख फोन अ फ्रेंड होगा तो तुझे फोन करूंगा। तो मैं स्नेक खेलता रहा दिन भर जल्दी उंगलियां चलाने के लिए। सो या सॉरी, यू वर सेइंग? नहीं, हम इसकी बात कर रहे थे, फिल्म की बात। हाँ नहीं, मैं बस एक लास्ट पॉइंट मेरा वो है कि द दीप्ति नवल फादर कैरेक्टर हु इज ऑलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इवन द दादी कैरेक्टर, ही इज ऑल्सो, आई मीन technically he's playing the Hindi film father. He's against the boy she likes, but again that's not played up in that melodramatic fashion. Yeah. It's done in a very simple. And also like what I really liked about this film, I noticed it in this film and also in Deevar, कि the girls are casually introducing their boyfriends to their fathers. Yeah. And वो coincidentally दोनों भी केस में वो गर्लफ्रेंड की बाप के इधर ही जॉब लगती है दोनों की। शशि कपूर की भी जॉब लगती है वहाँ पे पुलिस फोर्स में, और इनकी भी यहाँ पे। So that is like very different from the kind of melodramatic cinema we have been like that has been dished out to us in the early 90s की, जिसमें कि ओ राज और सिमरन तुमने बात भी कैसे की, मैं तुम्हारा मतलब you know the kind of वो नहीं क्या अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन की कोई तो है ना, आप मुझे अच्छे लगने लगे। सो उसमें नहीं कहते इट्स कंप्लीट, नहीं आप मुझे अच्छे लगने लगे में, इट्स बेसिकली दैट ओनली ना, दैट पेट्रियार्कल फैमिली की लड़कों से बात करना भी अलाउड नहीं है, एंड आई थिंक घर से जाना भी उसको अलाउड नहीं था बाहर। I like how you name drop a film and expect that we would have seen आप मुझे अच्छे लगने लगे because it's like the most natural thing. हाँ नहीं, गाना तो मुझे याद है। ऐसे मतलब काफी फिल्म्स देखी है जिसमें मतलब लड़कों से बात करना भी मना है, एंड एज अपोज्ड टू यू सी इन द 80s 70s एंड 80s की जब कैजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाँ ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, दैट आई फाउंड। क्योंकि सिनेमा का एक सोसाइटी की मॉरलिटी के अंदर एक एस्पिरेशनल रोल भी होता है, तो हो सकता है रियलिज्म में ऐसा नहीं, बट दे आर एस्पायरिंग दैट दिस कैन बी नॉर्मल, सो दैट पीपल कैन एस्पायर फॉर दैट। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, तो वो भी एक सिनेमा का आई थिंक इट्स आल्सो पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट अच्छा रियलिज्म है ऐसे होता है, बट देयर इज more things apart from realism. It's the most boring art movement को हमने इतना serious बना लिया. It's so real. Newspaper पढ़ लो real. Cinema has certain beauty. There is certain form in it. It's not just about realism. Yeah. But then, since you are making a documentary, how much of realism do you aspire to reflect in a documentary? No, whatever comes, there has to be mix of many things. Right, you know? Like how it. You have to also get close to the mind of person who made it. For example, that's the whole idea of making art, is like art, consuming of the art is more like knowing someone basically who made it, who created it. So that's the whole process. So pehle ke time mein we used to read so many books of certain author just to get close to how that author is thinking, what is author's point of view, so that you consume through reading or consuming many work or watching something, or unka filmography you watch, then you reach at certain, so that subconscious ka jo idea है, that there is subconscious in the film that is present through which you can understand the artist who created it. तो वो अभी कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो गए कि देयर इज़ नो आइडिया ऑफ सबकॉन्शियस इन द आर्ट. सो व्हाट यू सी इज़ बेसिकली वेरी चालू, वेरी उसके अंदर कुछ देयर इज़ नो ड्रीमीनेस और डायरेक्टर का एक सिग्नेचर स्टाइल दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन. सो लाइक फ्रॉम दिस film, for example, Chashme Buddoor, I can understand quite like how Sai Paranjapye is thinking, how her mind works, how her mind functions. Right. Even Shri Ram Raghavan's film, you can understand. Right. Like this person is very cinephile, how he's thinking, a little twisted mind. So that kind of element in the art is, I think, very important, rather than just ki ha realistically bata diya. I mean, this, come on, that's very small thing. Realism. एक वो टर्म है ना यार, कुछ फॉर हायर डायरेक्टर, लाइक टुडे इट्स जस्ट दे नो द क्राफ्ट बट दे नॉट एबल टू इंजेक्ट इट विद देयर ओन विजन. The films that you see, vision, experiences, memories, these kind of element has to be there. A personal memory film that explore their memories, their personal self. Okay, I have a cinephilia question. We can cut this if it sounds dumb. But ये जो auteur theory की बात है, there is that thing, right? Like there are some people who have
diss the auteur theory कि like if Steven Spielberg makes a film with a music composer like John Williams, फिर अगर वो एक ऐसी फिल्म बनाता है जिसमें जॉन विलियम्स कंपोजर नहीं है तो उस फिल्म का इफेक्ट कम हो जाता है, which actually proves that John Williams was the secret sauce all along. Or if Raju Hirani makes a Donkey without Vidhu Vinod Chopra, with whom he has made so far, Donkey turns out to be a much more inferior film than the ones he has made. So it's actually the it's a group of people who are exchanging ideas than one director figure. It is true, but the auteur theory is I don't think it can be applied on Hollywood that much or Bollywood that much. It is more of a यूरोपियन सिनेमा कॉन्सेप्ट जहाँ पे बजट इतना छोटा होता है और डायरेक्टर भी काम करता है तो उसी के साथ होता है. और दूसरा इसके अंदर जैसे होल आइडिया ऑफ की बातें तो होती हैं या फिर किसी का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली होता है, बट एवरीथिंग इज बाइंडेड बाय द विजन ऑफ दैट पर्सन एंड सो दैट आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वो एक फिलोसॉफिकल सेंस पे एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड दैट विजन. दैट इज ऑट्योर, नॉट दैट कि इसने कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, इसने कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज लाइक वोंकार वाई का जो सिनेमाटोग्राफर है क्रिस्टोफर डॉयल, देयर कॉम्बो इज सो ग्रेट. उनका तुम विजुअल स्टाइल देखोगे, उनकी फिल्म्स देखोगे, जब भी वो साथ में आते हैं यू फील मेस्मराइज्ड. बट यू लुक एट द फिल्म्स व्हिच Christopher Doyle has done without Wong Kar-wai. They are good, but they are not great. Doyle की खुद की भी फिल्म है, डायरेक्ट की भी. You look at that, ठीक है. तो it's not about individual capacity, but एक फिल्म का एक philosophical और पूरा thematic और form किस तरह से डेवलप होती है, वो एक फिल्म मेकर का विजन हो तो उस पे people work around that. So that is I think mostly the auteur theory, which is not possible in super high budget like Spielberg, क्योंकि that films are not for personal not that much for the personal exploration. It's more in the for a market for market, which is also a different kind of film, Hollywood kind of film. So yeah, that's there. Okay, cool. Anything else you want to add about Chashme Buddoor, Urjita? No, I don't think so. Cool. Anything you want to add, Anurag? Then we do the categories. Otherwise ठीक है. काफी बोल लिया सिनेमा कई सालों बाद मैं बोलने को मिला. भरा बेटा FTA के बाद. So Anurag, from 1981 Chashme Buddoor, what do you think has aged the best and what has aged the worst or not aged well? बेस्ट इज दैट होल जो हम बात कर चुके हैं, द होल चार्म ऑफ फिल्म इज देयर. थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे हुआ वो जो उनकी जो लड़कों की थोड़ी सी जो स्टॉकिंग वाली सब हरकतें थी, शिकार मिल गया वैसे. आई फेल्ट लिटिल मैंने कहा कि हाँ आई हैव टू desperately, I mean obviously that film of that era, so वो मुझे avoid. मैंने कहा हाँ ये इसको थोड़ा करना पड़ेगा, it's not good. Even in the छोटी सी बात में, छोटी सी बात, I was just coming to that, considering I mean there is a lot of thing in that which it leaves a bad taste. Sure. Urjita, for you? So what's aged the best, what's aged the worst? What's the question? मैं थोड़ा ये हो गया कि अरे अभी हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं क्या. ओके, what's aged ठीक है, बस हो गया. और जितना what's aged the best according to me, I think I hate to see the script, the jokes of the film, they have aged the best. I think because I laughed at each and every joke, intentional joke and unintentional ones also. The jokes have aged the best. And what hasn't aged what has aged the worst, I think like you also said कि वो जो पूरा slut shaming वाला जो scene था, not slut shaming only, कि मतलब उसके खिलाफ भड़काते हैं and वो भी सोच लेता है, and the fact that his friends even thought that इसका अच्छा चल रहा है तो चलो इसमें आग डाल देते हैं, that hasn't aged. Okay. But since we spoke about not aging well, मुझे याद है कथा में एक सीन है जहाँ फारूक शेख is with the other men in the building, standing there, and he says something. अरे आप लोगों ने ये नया चुटकुला सुना? और ना वो बोलने लगता है पर ऑडियो म्यूट हो जाता है और वहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ जाता है सेंसर्ड. अब ये पता नहीं CBFC ने डाला है वहाँ या साई परांजपे herself is commenting on censorship, but ये सीन है. These are the beautiful moments. These are the beautiful moments. She was like boys locker room में. Exactly. Yeah. Was that? I think I don't know. I just I got reminded of that introduction scene in Sandeep Pinky Farrar.
Which one? संदीप और पिंकी हाँ, परार, वो हाँ। बिगिनिंग में नहीं क्या दिवाकर बैनर्जी की फिल्म है, उसमें नहीं क्या वो जब भी अरे चेस गाड़ी चल रही होती है, एंड देन द गाय लाइक अरे तेरे को एक घर में ले जाके एंड देन फिर म्यूट हो जाता है उसका पूरा, एंड देन यू कैन सी दैट वो काफी ज्यादा वायलेंट चीजें बोल रहा है बट वो म्यूट कर दिया गया। एक गोडार्ड की फिल्म है द बैंड अपार्ट, तो उसमें एक जिसका प्रोडक्शन हाउस बना दिया टेरेंटिनो ने, उसका प्रोडक्शन हाउस बैंड अपार्ट है गोडार्ड से इंस्पायर्ड होके। तो उसमें एक सीन है कि वो तीनों कैरेक्टर बैठे होते हैं, तो अचानक वो कहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट सेकंड याद नहीं, शायद 45 या 60 सेकंड, मतलब विल जस्ट स्टे साइलेंट फॉर 60 सेकंड, आई थिंक इट्स टाइम टू बी साइलेंट अ लिटिल बिट। तो फिर वो साइलेंट हो जाते हैं, फिल्म का ऑडियो ऑफ हो जाता है और ऑडियंस भी एक्सपीरियंस करी वो साइलेंस बीच में, फक इट मैन, अचानक ब्यूटीफुल। तो हाँ मतलब ये ऑडियो ऑफ करने से आई रिमेम्बर, सो या गोडार्ड का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है टेरेंटिनो पे कि yeah, nice. For me, what's aged the best? I think it's one of the most authentic portrayals of bachelorhood in cinema. I think I love that. What's aged not aged so well? I think I felt at least in the first 30-35 minutes the pacing was a little maybe for our generation who's used to scrolling reels, it got a little slow for me. So मुझे तो slow नहीं लगा। हाँ नहीं it's not unwatchable but थोड़ा सा मुझे लगा कि also this film is very sparse on background score, so there is that also. So वो थोड़ा सा maybe that is why you felt like थोड़ा play का setting है because उसमें music that's also even that love story भी I thought since both the characters are so थोड़ा बहुत boring, दीप्ति नवल and फारूक शेख, so that extension of the love story I felt इसमें नोट्स में लिखा है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज वो जब चमको बेचने आती है उसको वो कहती है इसको पानी में 5 मिनट रखना है, एंड देन दिस शो द 5 minutes स्पेंड गोइंग एंड देन शी लाइक 2 मिनट तो हो ही गए होंगे, एंड यू नो दे ट्राइंग टू सी क्या बात कर सकते हैं 5 मिनट तक, सो दैट वाज रियली फन। इवन उसके बाद मतलब ऐसी मतलब लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का पॉडकास्ट भी शुरू किया फारूक शेख ने, जीना इसी का नाम है बाय द वे, व्हिच कैन बी द एक्सटेंशन ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल टॉक शो, नॉट वाज दैट अ पॉडकास्ट? आई वाज जस्ट किडिंग बट या टॉक शो काइंड ऑफ आई थिंक आलिया भट्ट का फर्स्ट अपीयरेंस नो हाँ एक्चुअली महेश भट्ट के साथ, पूजा भट्ट के साथ आई थी, पूरे लोग आए थे, मतलब रुला देंगे वो जो आएगा उसको। यार फारूक शेख इतना बढ़िया होस्ट क्या करता था, फिर सुरेश ओबेरॉय आ गया था एंड ही होस्टेड इट सो बैडली, you know this? हाँ फिर सुरेश ओबेरॉय होस्ट करने लगा था एंड हिज फर्स्ट एपिसोड वाज विवेक ओबेरॉय wow because Satya was going to release. अब हम सुनेंगे आपके 32 मिस कॉल सलमान के, It's literally his school friends के हम तुम तो हमारे घर आया करते थे, ये वो शाहद अली जिसने फिल्म बनाई है वही हो रहा है सब, बट या सलमान का फिर जीना इसी का नाम है, अपने बच्चों के लिए जियो क्योंकि और है ही क्या। By the way, you went to see Tiger 3 in the theater. I remember you posted about it. It's quite I watched it because of my family is a film buff, so they watch every film. So my father, my mother, especially my father likes films a lot. So we watch. मैं फिल्म में बड़ा वैसे देखता हूँ जैसे राकेश बेदी जो घूम रहा है इसमें बीच में चला गया पतंग उड़ाने पॉपकॉर्न खाने, तो आई वॉच फिल्म, फिर मैं कुछ अच्छा सा कुछ गाने वाने सुन लेता हूँ बीच में, फिर क्यों टिकट तो पापा ने करवाई थी अभी बैठना, वहाँ मोमो खाने चला जाता हूँ, से निकल के आ जाता हूँ, आई वॉच फिल्म लाइक दैट इन अ वेरी लाइफ लाइक सेटिंग लाइक फ्लोइंग। So देखी थी, I watched Tiger 3. If you had to program a double feature with Chashme Buddoor, which film would you screen? छोटी सी बात. Okay. With it, I think both film are tribute to the cities and also to a particular time which is not there anymore. So these films are basically archival of memories. Very beautiful archival of memories. Sure. I would screen Katha with it because I think again Sai Paranjapye, you see good Farooq Sheikh, now you can see asshole Farooq Sheikh in Katha, so it's a great companion piece. Also Deepti Naval is in Katha as well, and again Delhi and Bombay. Who's the other guy in the Nasir. Nasir. Yeah. Nasir is playing the Seedha simpleton who comes to Bombay. So yeah, that would be my choice. Urjita, do you have one in mind? Yeah, Jaane Tu Hai Jaane Na, because it's like evolving friendships. Like friendship
during this time it was just like men being friends with each other, and now cut to this time when there are male female female friendship, and the Jaane Tu Hai Jaane Na is essentially a film about male female bonding, even though like in the end wo jo do best friend hai wo saath exactly. I was just about to say within them they become couples though. Within them they become couples, but I feel like it's a nice leap Fair from enough. them. Yeah, So cool. I like, and also like वो college life का जो difference है वो भी दोनों films में दिखाई दे रहा है. Fair so enough. That I feel. Yeah. For that and also I Jaane Tu Hi Jaane Na is a very Bombay film. Yeah, it's Very a Bombay 2000s Very Bombay Bombay film. Yeah, cool. New Bombay. I would have Not- said Rang De Basanti, but then just the first half, because the film is not about college life at all. Yes. First half. In fact, the first half is not even DU. That's Jaipur, Nahargarh. Oh really? That वो दारू पी के जो गिरने वाले scenes है ना, which is the Nahargarh, and the terrible cultural impact that it had was that Nahargarh. Drunk Basically, people. I'm from Jaipur, so Nahargarh is a fort. So now everybody started going to Nahargarh with bottle, okay, beer bottle. तो वो भी चलो पी लो, कोई बात नहीं है. बट वो बॉटल फोड़ने का इतना ज़्यादा है कि इफ़ यू वॉक इन द आउटसाइड द नाहरगढ़ तो पूरा रोड पे ना टोबैको सबसे ज़्यादा पीते हैं राजस्थान में, तो पूरा ग्रीन लैंड दिखेगा. तो इट फील्स लाइक कुछ यहाँ पे कोई युद्ध लड़ा गया था जहाँ पे ये हुआ है, क्या एंशिएंट कुछ है. बट वो ग्रीन टोबैको बॉटल्स वहाँ पे हर जगह दिखेंगी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फिल्म. Oh no. तो फिर वहाँ पे भी पी के ऐसे गिरते थे क्या वो पानी में? ऐसे गिर जाते होंगे इधर उधर. पानी में तो गिर नहीं सकते ना, बिकॉज वाटर इज़ वेरी डर्टी. वो उन्होंने उनके लिए क्लीन किया था. बट ऑब्वियसली अंदर बिल्कुल अलाउड, अंदर भी अलाउड ही थी जब हम लोग उसमें थे. मतलब ऑब्वियसली चुरा के ले जाते थे लोग. बट हाँ वो जो सीन है ना उसका बड़ा कबाड़ा. उसके पहले वहाँ क्या हुआ करता था? ज़्यादा लोग नहीं आते थे. ओके. एज फार एज आई रिमेंबर, आई मीन कोई स्टोरी मुझे करेक्ट कर दे, बट मैंने भी फिल्म के बारे में उस जगह के बारे में उस फिल्म के थ्रू ही पता लगा. मैं अच्छा यहाँ पे शूटिंग हुई है, बीएसपी के यहाँ पे हमको भी लूज कंट्रोल होना है, टीम लग करना है यहाँ जाके. Cool. Anurag, if you had to rate Chashme Buddoor from 1981 on a scale of 1 to 10 on a has it aged well scale, how well it has aged, the better it has aged, the higher you can rank it. 8.5 I'll give. Okay. Yeah. Okay. And on a rewatchability scale, if you had to rate it, I can watch it anytime. I because of the whole Delhi का architecture उसके लिए. Yeah, I'll rate it 8. Okay. 8.5. Urjita, for you? 8. Okay. Yeah, 2 points I'm cutting. Just उतना भी एज नहीं हुआ है. And on a rewatchability scale? Rewatchability, I think, man, it is 8.5, I feel. Okay, I genuinely enjoyed it, especially for the jokes. I think I'll rewatch it. What do you think? मेरा 10-10 है दोनों. क्या बात कर रहे हो? 10 has it aged well, 10 rewatchability. What? I think we don't Big make fan, films like this anymore. It's a very rewatchable film. So for the scarcity you're rating it? No, I think it helps that we are doing it after Chhoti Si Baat, because it's almost like the problems we had in that film. Some of that exists here, but it's done in a more nuanced way that it doesn't hit as badly as it did in that film. In that So yeah, and yeah, I mean, I love Farooq Sheikh, I love Deepti Naval, I love everybody in this film. So yeah, I love Sai Jafri. So yeah, it's just 10 for me. तो ये अनजाने में हमारा डबल फीचर हो ही गया ना, मतलब छोटी सी बात और हाँ, kind of. तो हाँ, that was our ratings of Chhoti Si Baat. Pretty high rating film from our end. Let's very quickly do the alternate ending segment and wrap it up. So let's do the alternate ending segment right now. Okay, so this is the alternate ending segment where we suggest an ending other than the way the film ended, or we pitch a sequel. So guys, मेरे पास एक alternate ending है. तो फिल्म ख़त्म होती है, शादी हो जाती है फारूक शेख और दीप्ति नवल की. अब शादी हो गई, अब इनको कहीं रहना है, ठीक है. तो फारूक शेख कहता है दोनों को कि भाई तुम लोग निकलो, ऐसे कैसे मैं घर, बीवी आने वाली है. तो राकेश बेदी और रवि बासवानी निकलते हैं. And now they move into another flat together, okay, while Farooq Sheikh is here. And they are fighting all the time. तो फिर उनको रियलाइज होता है कि हममें एक फारूक शेख चाहिए था हमारी ज़िंदगी में एज अ मीडिएटर, कि ही वॉज लाइक आवर पर्सन. तो अब क्या करें यार, क्या हमको तीसरा चाहिए. सो देन दे आस्क लल्लन भाई टू मूव इन, लल्लन मियां टू मूव इन विद देम. इज लाइक के देयर लाइक के देखिए आप यहाँ रह सकते हैं, और पर लल्लन मियाँ इज़ लाइक के भाई मेरे भी बीवी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे. तो ये भी बात ठीक है.
तो बस इसके आगे सोचा नहीं मैंने, like this is where the this could be like a fun plot, just adding to whatever you said. Yeah. I think then the movie could be like a very fun movie where Lalan Mia is also having problems in his own family, where every day he just उनके working hours उन्होंने 24 कर दिए because he doesn't want to go to his place at all. Oh. So he doesn't like going to his place, going back home, and he's also having an existential crisis that this is life. I have to go home, spend time with my bad wife and bad children, huh? And then like when these two they come up with this proposal, he's like, how about this? I cheat on my wife with you guys. So then now he's having an with you guys as in you two as in cheat as cheat. in not in that अच्छा way. मैं बोला कि ये क्या हो गया. So as in he's like living this alternate life with them. मतलब वो काम 6 घंटा कर रहा है but बाकी का टाइम इनके घर रह रहा है और बस रात को सोने को जा रहा है. हाँ घर पे. So something and that is the whole. अनुराग, what do you think of our alternate endings? एंड में ये हो सकता है कि फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन. वो जो दोनों कैरेक्टर होते हैं वासवानी के और राकेश बेदी के, वो धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. और फिर वो लॉन्च करते हैं चमको 2 और फिर उसको लेके जाते हैं शार्क टैंक के अंदर एंड सीड फंडिंग उठाते हैं एंड दे राइट अ वेरी गुड बुक, मोटिवेशनल बुक फॉर द करंट एंटरप्रेन्योर. नाइस. फिर पता चलता है कि इनका जो कंपनी था पूरा फ्रॉड पे बना हुआ है एंड देन फाइनली दे गेट इनसाइड. और फिर वो उन्हीं दो चोर बन के आए थे. तो उन्हीं दो चोर जो 2 गुंडे थे उन्हीं के साथ रह रहे हैं एंड दे थिंक ऑफ ईच अदर एज अ रिफ्लेक्टिव इमेज. और वहाँ पे एक दोनों के शॉप पे इट कैन बी. और दूसरी तरफ जो ललन में है उन्होंने कहा कि सिगरेट तो अभी धीरे धीरे इसका मार्केट उतना नहीं है, इट्स नॉट कूल एनी मोर, तो इससे अच्छा आई शुड सेल गांजा LSD एंड MD इन आरंबोल गोवा. तो अब ललन मियाँ हिप्पी हो गए, वहीं की रह गए पार्टीज में वो एंजॉय करते हैं और गोवा में वो उनका बसेरा है. तो उनका है उनका नाम हो सकता है मैजिक मशरूम ललन. ललन मियाँ LSD वाले हो गया ये. I like this ending. ललन मियाँ. हाँ. But I like how this didn't sound like a story. This sounded more like a गवाही कि ये आप किसकी बात कर रहे हो, ये किसकी कहानी सुना रहे हो. ये हमने वो किया हुआ एंड में, बायोपिक्स के एंड में नहीं आता है ललन मियाँ went on to set a shop in Goa. जैसे वो अक्षय कुमार और श्रीदेवी की फिल्म में आया था ना, फिर उन्होंने बदला लिया. That is the climax of. In fact, he can become a good spiritual guru. Lalan Mia? Actually, yeah. He's a very zen guy. Yeah. He has this one line I noted down कि तुम लोगों के पैसे तो तू अंडा गफील कर लेता है. I don't know what अंडा गफील means. हाँ? मैकगफिन. ओके. पता नहीं वही, पर ये सुनने में बहुत अंडा गफील कर लेता है. आई एम अज्यूमिंग कि गायब कर लेता है. Interesting word. Yeah. Anyway, that brings us to the end of the Chashme Buddoor episode. Anurag, thank you so much for taking time out and joining us. I can't recommend Anurag's podcast enough. It's, I think, one of the finest podcasts out of India. So please check it out. Anything you want to plug, Anurag? Where can people find you? Anything you want people to see that you have done? Please go ahead. You can find me on YouTube where I'm making longer videos these days. अभी थोड़े दिन पहले I started making like long videos, 10 minutes, 12 minutes वाले. So yeah, my YouTube is Anurag Minus Verma. You can also find me on Instagram, which is also Anurag Minus Verma. Twitter, I post mostly political and social stuff. So you want to abuse me, then you can come to Twitter and say this was not expected from you after watching YouTube and Instagram. It happens a lot. Yeah. Remember you mentioned. ये बोलता है, ये करता है. हमने को लगा जोक सुना रहा है. Nice. Entertainment is a good form of propaganda. Totally, yes. I mean, if we are living in that era where that is clearly. हाँ कुछ नहीं. मैं तो इनके साथ हूँ ही नहीं दोस्तों. मुझे ब्रांड डील्स चाहिए. Where can people find you? You guys can subscribe to me on my YouTube channel @urjitawani and my Instagram also @urjitawani. Love you. Nice. And you can find. You thought I was looking into blank space all this while. हाँ 1.5 घंटे बाद मिल गया. नहीं बात करते तो सोच रही पूरे टाइम सोच रही कि यार ये लड़की भूत को देख रही है क्या, ये हेलुसिनेट कर रही है क्या. ये पार्ट आ रहा है. You can find me on Twitter. I'm @abbasmumin and on Instagram as abbasmumin88 and मैंने आखिर तक ये बोला नहीं पर अब बोल देना चाहिए कि फाइनली हमें अनुराग माइनस वर्मा के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. चलिए अगले हफ्ते we'll see you with a new movie and a new guest. Till then, goodbye. IVM
M